Hello students, how are you? I hope you are good. So today we are going to start a new topic which name is articles. So let's begin students. Articles को समझते हैं इसमें. You have already learned that there are three articles. They are a, an and the. Articles a and an do not refer to any particular person or things. Therefore, they are called the indefinite articles. Use of a and an. Articles a and an are used to before a singular countable noun. And while using a or an, just listen to the phonic sound. If the singular noun begins with the vowels a, e, I, o, u, sound use an, and if the sound is that of a consonant then use a before it. So यहाँ पर consonant sound और vowel की sound भी काफ़ी depend करती है बच्चों कि आप कौन सा vowel use करने वाले हो, कौन सा article exactly आप use करोगे, किस vowel के आगे या किस consonant के आगे जो word start हो रहा है. Look at the following pictures and read the sentence carefully बच्चों. The boy is wearing a raincoat. My aunt gave me an orange. In the first sentence the word raincoat starts with a consonant sound and in the second sentence the word orange starts with a vowel sound. Exceptions, however, there are exceptions to these rules. Read the following examples. He is an honest man. I shall return within an hour. Though the words honest and r start with h with a consonants, we use n before them since h remains silent and the pronunciations come out as like honest or our. So here we study the following example. Mr. Smith is a European. The man is wearing a uniform. Though the words European and uniform start with e and u which are vowels, they sound like a consonant u. Then why you? So we use a before them. Use of the का पढ़ते हैं बच्चों. The का use किया जाता है. The is a definite article. The is used to refer to a particular or definite person, thing और place के लिए use किया जाता है. Read the following examples. The flower vase is on the table. The temple is near our house. The is also used before the names of things which are only one in the world. ऐसी चीजें बच्चों जिस सिर्फ वर्ल्ड में एक ही है. Like the sun, the moon, the sky. And before the names of फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं. द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार. बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एंड होली बुक्स के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे. लाइक द हिमालयाज, द गंगा, द अरेबियन सी. तो ये थे बच्चों आर्टिकल्स द को आके एग्जाम्पल जो आपने पढ़े और समझे और अ और एन को भी समझा किस तरह से वो वोवल और कॉन्सोनेंट के साथ यूज किए जाते हैं. तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है. चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट दैम बच्चों.